Let's take a look at the SSLV integration activities at SDSC Shar. The launch campaign began with the flag off of the nozzle end segment of the first stage from second vehicle assembly building to the mobile service tower. The movement of middle and head end segments. The joints being open type or dry type, minimum time is taken in the assembly of all the segments on the single day. अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी खंडों को जोड़कर SS1 प्रथम चरण तैयार किया गया और अब इग्नाइटर को इसके साथ एकीकृत किया जा रहा है। यह SS2 है जो कि द्वितीय चरण है SSLV D1 रॉकेट का। इसे इंटर स्टेज के साथ एकीकृत कर लॉन्च पैड लाया जाएगा। The second stage along with the interstages will be moved to the launch pad. Minus 25 minutes. द्वितीय चरण को एकीकृत कर लॉन्च पैड लाया गया है। मोबाइल सर्विस टावर में क्रेन की मदद से इसे प्रथम चरण के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा। Noted. ALSA to control event number 123 completed. Roger. इन सभी गतिविधियों के दौरान पूर्ण गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। और अब आप देख पा रहे हैं तृतीय चरण SSLV का यह तृतीय चरण एकीकृत कर दिया गया। And that's the third stage. After the third stage, now you are able to watch the satellites being prepared. That is the EOS-02 satellite and the Azadi Sat. जी हाँ, अभी आप देख पा रहे हैं EOS-02 उपग्रह तथा आजादी सेट को एकीकृत कर ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है। That's the encapsulated assembly including the velocity trimming module and the satellites being prepared. This will be moved to the launch pad and integrated with the launch vehicle. अब संयुक्त उपग्रह तथा VTM मॉड्यूल को लाकर MST में SS3 तृतीय चरण के ऊपर समायोजित कर दिया गया और इसके साथ ही SSLV पूर्णतः तैयार। अब MST मोबाइल सर्विस टावर को पीछे पार्किंग एरिया पर ले जाया जा रहा है। The SSLV is fully ready for its maiden mission. विहंगम दृश्य श्रीहरिकोटा का प्रथम प्रमोचन मंच। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Stop. Normal. P1 tracking. PT tracking. R2 tracking. P2 tracking. That was a brilliant lift-off, a sight to behold. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D1 लॉन्च व्हीकल का। SSLV D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए बहुत ही रोमांच का पल है ये। प्रथम प्रमोचन SSLV D1 का। Maiden launch of SSLV. The performance of first stage is as per the prediction. First stage performance normal. SHAR-1 as in main auto. Plus 1 minute. प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ। SHAR-2 as in main auto.
वैज्ञानिकगण निरंतर नजर बनाए हुए हैं सभी आंकड़ों पर। Flight parameters and ground trace on your screens right now. Shar, Bangalore and Trivandrum It says telemetry 50 stations DDT. tracking. प्रथम चरण का प्रज्वलन काल करीब 117 सेकंड का होगा। This 22.5 meter long stage is powered by HTPB based solid propellant, 87 tons mass. It generates a thrust of 2600 kilonewtons. During the SS1 action time of 117 seconds, the altitude of the launch vehicle crosses about 85 kilometers. प्रथम चरण के सभी तंत्र सामान्य कार्य करते हुए Second stage ignited, first stage separated. अभी अभी आपने सुना रेंज निदेशक ने घोषणा की द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो चुका है तथा प्रथम चरण को पृथक कर दिया गया है। As per the announcement of the Range Operations Director, the second stage has started its operation, generating maximum vacuum thrust of 235 kilonewtons. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब Payload fairing separated. 221 सेकंड का। ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। Trivandrum and Port Blair stations presently tracking. Plus 3 minutes. अब हम 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। There is a quick succession of several flight events. The SS1 separation, following the SS2 ignition, Second stage performance normal. and then the closed interstate separation, initiation of closed loop guidance for the flight, and of course, the dense atmosphere and 100 kilometers altitude has been crossed. The payload fairing also has been separated. यान की गति 3.35 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 228 किलोमीटर। Plus 4 minutes. इस घटनाक्रम में SS2 का प्रज्वलन काल खत्म होने के बाद करीब 90 सेकंड का कोस्ट फेज होगा। Second stage action completed. Current altitude is Vehicle is in 260 combined kilometers. coasting. 4 hours, 4 minutes 30 seconds past the launch time. इसे SS2 SS3 कंबाइंड कोस्टिंग फेज कहा जाता है। इस घटनाक्रम में अगली घटना होगी SS2 5 का minutes. पृथक्करण तथा SS3 का प्रज्वलन। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। Next flight event is the separation of the second stage, which has completed its Second operation. stage separated. Now we have got the confirmation that the second stage has been separated. Third stage ignited. जी हाँ, द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल तथा कोस्ट फेज पूर्ण करने के पश्चात पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण SS3 प्रज्वलित हो चुका है। Right now the SSLV is in its third stage regime.
The carbon fiber filament wound case with 4.5 tons of HTPB based solid propellant loading, SS3 will propel the rocket from 333.6 kilometers to 356.5 kilometers. A significant delta V addition takes place. It is about 3.7 kilometers per second. That's the amount of velocity increase. SS3 का प्रज्वलन काल 112 सेकंड का होगा। इस दौरान यह निर्वात प्रणोद 160 किलोन्यूटन का उत्पन्न करेगा। Third stage performance normal. इस चरण के दौरान ही कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा सकेंगी। +7 minutes. Singapore and Port Blair stations still tracking. The action time for third stage is 112 seconds, after which there will be a combined coast phase. Third stage action completed. तृतीय चरण अपना प्रज्वलन कार्य पूर्ण करता हुआ। Vehicle is in coasting. Presently, it's the regime of coasting. The third stage has completed its operation, but yet to separate from the ongoing 8 launch minutes. vehicle. Control for pitch, yaw and roll being provided by the velocity trimming module thrusters. In about 3 minutes of coasting, there is a triple velocity addition and triple altitude gain. VTM will then operate and compensate for the velocity necessary for the injection of satellites and also the correct altitude. भारत इस साल को आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह मना रहा है। भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ में पूरे भारत में तरह तरह से इसे मनाया जा रहा है। इसमें सभी ओर विकास और उन्नति की दिशा को दिखाया जा रहा है। यह पर्व इसरो में भी मनाया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ मिशन न सिर्फ एक नवीन प्रमोचन यान का प्रदर्शक है, बल्कि मिशन के उपग्रह आजादी सेट को आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित हैं। We are 9 minutes past the launch time. Combined coasting in progress right now. यह मिशन एक और कारण से महत्वपूर्ण है। इस यान में सफर कर रहे आजादी सेट को हमारे देश के ही 750 स्कूली छात्राओं ने मिलकर बनाया है। इस तरह यह मिशन महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए वुमेन इन स्पेस के थीम को भी सहायक बन रहा है। VTM वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल वह टर्मिनल चरण है जो कि अंतःक्षेपण की पूरी स्थितियां प्राप्त करेगा। +10 minutes. You are watching us live from the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. This is a maiden launch of SSLV D1 EOS-03 mission. अभी आप ऑन बोर्ड कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं EOS-2 का पृथकीकरण तथा अंतःक्षेपण उसके उद्दिष्ट कक्षा में।
The maiden flight of SSLV D1 just now completed. The SSLV's all stages performed as expected. The first stage performed and separated. The second stage performed and separated. The third stage also performed and separated. And we had in the terminal phase of the mission, some data loss is occurring, and we are analyzing the data. And we will come back on the status of the satellites and as well as the vehicle performance soon. So until then, please bear with us that we are currently in the process of analyzing the data to conclude on the final outcome of the mission with respect to a stable orbit achieved or not. So please please wait and we'll come back. Thank you so much for your patient viewing of this live telecast from SDSC SHAR. Thank you so much once again.